Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. We are doing this 5 questions per day CAT 2020 questions. My dear students, this is you can say slot 1 questions. This is our third module on the 5 days per day. Okay, let me start to solve these questions for you. ठीक है, एक एक करके देखते हैं किस तरीके से उसको सोचना चाहिए. These are the questions which are coming as a mixed of everything. Yes or no? They are not coming from you can say a particular topic wise. They are in general a sort of random questions. Okay, let's start. Here comes question number 1. The number of distinct real roots of the given equation. Yes or no? Now we know that the equation has this common value which is known as x plus 1 upon x. Yes or no? ठीक है. So दोस्तों इसको हम जनरली कैसे करते हैं? ठीक है, अगर हम देखें है ना, अगर हम इसको एक नॉर्मल वे में देखें कि अगर ये x प्लस 1 अपॉन एक्स नहीं होता, ठीक है, उसकी जगह पे एक नॉर्मल y होता, सो वी नो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ऐसा इक्वेशन बनता. यस और नो? ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं रियल के लिए? ठीक है, सो हमने इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंडामेंटल देखा है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में whenever b square minus 4ac is greater than 0, ठीक है, then it has two distinct real roots. Okay, b square minus 4ac is greater than 0, तो उसको दो distinct real roots होते हैं. Yes or no? ठीक है, और अगर ये equal to 0 होता है, so you have one, you can say rule. Okay, one root. That's how the idea is. Okay, but anyway, हमारे सामने ये वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 है. ठीक है, पर y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x है. आपको याद होगा in one of the earlier module I discussed with you that there is an identity which says x plus 1 upon x is always greater than or equal to 2. ये आपको याद रखना है. yes or no? चलिए इन सभी चीजों को मिक्स करके देखते हैं. yes or no? So we have y minus 2y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0. इसको हम मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करते हैं. सो व्हाट डू वी गेट? y minus 2, this is y minus 1 equals to 0. So that means y is equal to 2 and y is equal to 1. These are the two roots possible for y. Okay, we can't jump on this and say we have two roots, because we have to now apply y is equal to x plus 1 upon x. Yes or no? So my dear students, we know y is equal to x plus 1 upon x is equal to 2, and another is x plus 1 upon x is equal to 1. We know by the you can say identity that x plus 1 upon x, अगर x real value है तो x plus 1 upon x can never go less than 2. मतलब this is not possible. Yes or no? The only thing which is possible is x plus 1 upon x is equal to 2, and that value, for that value x is equal to only 1. Okay, so that means how many distinct real roots are possible? There is only one which is possible. Yes or no? So my dear students, okay, we need to know a lot of concept behind this idea. Okay, one, you should know the idea of quadratic equation. You must know those quadratic equations have a condition called b square minus 4ac. If it is greater than 0, then it has a two distinct real roots. Okay, if it is equal to 0, then you have one distinct real root. Okay, and now you should also know one x plus 1 upon x की identity. It has to be greater than or equal to 2. अगर आप ये याद रखेंगे, जहां कहीं x plus 1 upon x की वैल्यू अगर आपके साथ पूछी गई है, अगर आप उसको याद रखेंगे that this is an identity, ठीक है, believe me, the work will become easy for you, because x plus 1 upon x equals to 2 हो जाता है या greater than or equal to 2 हो जाता है. Now you club both of them and you get an answer. I hope it is very clear. Great. Chali, this is question number 1 for the day. We go by question number 2. A person spent 50,000 to purchase a desktop
and a laptop. He sold a desktop at 20% profit, laptop at 10% loss. If the overall he made 2% profit, ठीक है, then what is the price of desktop? दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इजी है. I will tell you what is the best way to solve it. Okay, I'm going to give you the best way to solve it. ठीक है, so the best way to solve it is to make equation. First, you make equation is desktop plus laptop total price is 50,000 rupees. Okay, that's the first equation you will make. Second equation which you are going to make is he sold the desktop at 20% profit, so it becomes 1.2 of D plus laptop at 10% loss, so this becomes 0.9 L, and he gets overall 2% profit. Yes or no? So what is a 2% profit? 50,000 ka 10% is 5,000. So 1% is 500, 2% is 1,000. So thereby this becomes 50, you can say 1,000. Great. Is that easy? Yes. So this is equation number 1 and this is equation number 2. We need the value of desktop. So we remove, we go by elimination method. We look at the value of L, we eliminate laptop. So we multiply this full equation by 0.9. So what do I get? 0.9D plus 0.9L is equal to 45,000. I think this is pretty manageable. Yes. And then we have an old equation which is 1.2D plus 0.9L is 51,000. So subtract करेंगे. What do we get? 0.3D is equal to ये कट जाएगा है ना. So minus minus minus. So that makes it to 6,000. So D is equal to 20,000. Easy. Yes or no? Once again, इसमें option नहीं थे. You had to simply put your value as 20,000. Easy? Great. Go to question number 3. बहुत मजेदार लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 is a very logical question. क्या दिया गया है? Among 100 students, X1 have birthdays in January, X2 have birthdays in February, and so on. And if X0 is a maximum, so X0 is a max of X1, X2 up to X12. Okay, what is the meaning of this idea? The idea of this is, let us assume 100 students hai. 100 students में से let us say some around all 100 students had their birthday in the month of January. That is possible? बिल्कुल possible है. ऐसा तो नहीं बोला कि हर month में अलग अलग लोगों की birthday, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है. So we can assume that all students have birthday either in January or in February or any other month. Yes or no? So thereby X0 की वैल्यू क्या होगी? So what does it give us? It says maximum of, I'm assuming January महीने में सभी बच्चों की बर्थडे है. So this is 100 and बाकी सब 0 0 0 0. So that means what is the answer? Answer would be 100. Yes or no? In case ठीक है, अगर ये x1 x2 x12 का वैल्यू let us assume some around you can say x1 is 12 ठीक है, किसी महीने में 32 ठीक है, एंड करते 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 कुछ हो गया है ना. So what is the value of x0? X0 would be maximum like 32. Okay, now they are asking that what is the smallest possible value of x0. Now to get the smallest possible value of x0, which means out of the maximum of x1 to x12, when it becomes minimum, it becomes minimum when all values are equal. Yes or no? So that means x1 equal to x2 equal to x3 up to x12 ये minimum हो जाएगा जब ये सबका equal होगा. Yes or no? ठीक है, equal होगा. So what do? We divide 100 by 12. Yes or no? Now obviously this is not perfectly divisible. Okay, so what do? We try and look at, you can say करीबन we will apply 8 into you can say 12. 12 8 जा कितना होगा? ठीक है, 12 is you can say you get 96. ठीक है, that is how the possible is. Okay, sorry, not 12 8 I'm sorry, extremely sorry. It is 8 into 12. I'm assuming कि 8 महीनों में
11 लोग हैं, दैट इज 88, ओके। और बाकी महीनों में, ठीक है ना, बाकी जो 12वां महीना बचा उसमें कितने लोग होने चाहिए? यू गेट सम अराउंड 12 पीपल इन दिस, यस और नो? दैट इज रियली पॉसिबल, यस, ठीक है। और अनदर वे इज वी एज्यूम कि 11 महीनों में टोटल 9 मैक्सिमम हो रहा है सबका, सो दैट इज 99। और जो 12वां महीना एक बचा उसमें एक आदमी था, सो टोटल 100 लोग हो गए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो बेसिकली मिनिमम वैल्यू चाहिए, सो दिस इज द बेस्ट वे टू थिंक। क्या हम सोचेंगे कि हम ये सोचेंगे कि हम 11 महीनों में जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है सब में इक्वल, सो दैट इज 9 इक्वल है, सो दैट इज 99, ठीक है। और एक और महीना बचा उसमें हमने एक लगा दिया, सो दैट मींस आंसर वुड बी 9। I think this is easy, very good. We go to question number 4, okay, we go to question number 4, ठीक है, okay, we go to question number 4 and it says very interesting question on time speed distance, ठीक है। Two persons are walking besides a railway track at respective speeds of 2 and 4 km per hour, ठीक है, in the same direction. A train came from behind and crossed them in 90 and 100 seconds, ठीक है, respectively. The time taken by the train to cross the electric post is nearest to. So we all know that generally ये possible कैसे होगा? Length of the train is L, okay, length of the speed of the train, sorry, the speed of the train is S, ठीक है, and it is crossing a man which is moving in the same direction. कैसे? क्योंकि ट्रेन पीछे से आ रही है, ठीक है। आदमी जो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है उसको S-2 बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन, सो देयर रिलेटिव स्पीड बिकम्स S-2. L upon S-2 is equal to 90 seconds. Is that comfortable? Yes or no? So this becomes 90 seconds. अब ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, ओके। सो इसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट व्हाट डू वी डू? L is equal to 90 into S-2, ये मान के चलते हैं। Similarly for the other guy, L is equal to 100 into S-4, ये दोनों सेम है, yes or no? ये दोनों सेम है, so 90 into S-2 is equal to 100 into S-4, ठीक है। So what do I get is, you can say 9S minus 18 is equal to 10S minus 40, so S is equal to 22, okay। So दोस्तों ये जो उसको कन्वर्ट करना था, डिवाइड बाय 3600 आवर में कन्वर्ट करना था, तो मैंने जब यहाँ पे इक्वेट किया तो मुझे वो 3600 की जरूरत नहीं है। I do not want, because that's a common value that can get, you can say, removed, and thereby I can go by this method. Okay, so what do I get? S. Okay, but that's not the question. The question is, what is the time taken by train to cross the electric post? So that is L by S. क्या होगा is what they are asking us. Okay, so what do I do? I simply put a value of S in any of this equation, ठीक है, and I will find out a value of, you can say, L by S. So I know it is 90, so I need to find out what is L by S. I know L is 90 into S minus 2 upon, you can say, S. We know S is 22, so I get 90 into 22 minus 2 is 20 divided by 22. Simple. This is so easy. Yes or no? So this becomes, you can say, 10 and this becomes 11. So this becomes 900 by 11. 900 by 11 is approximately 81.81 के आजू-बाजू कुछ बनेगा. 1 by 11 is 9.09. So thereby approximately it is 82. Is that comfortable for everyone? Very easy. Yes or no? आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बराबर है। I simply applied first equation saying that L upon S minus 2 is 90. So L becomes 90 into S minus 2. On the same way, for this 4 kilometer wala guy, L becomes 100 seconds into S minus 4. L और L same था, इसलिए मैंने इसको equate कर दिया. When I do this equal to, okay, so I get a value of S. My question is not about S. My question is about L by S. So when I do L by S, I put a value of L here, ठीक है, that is 90 into S minus 2 upon S. तो वहां से मुझे वैल्यू मिलेगा. Is that comfortable? Very easy. चलिए, great. We go to question number 5. बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन दिखता है, but in reality it is not.
इट इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट दिस आंसर. ओके, चलिए देखते हैं. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशंस एग्जिस्ट टू दिस इक्वेशन? Okay, so what does it mean? It means x square minus 7x plus 11 to the power x square minus 13x plus 42 is equal to 1. इसके कितने distinct solution दिखते हैं दोस्तों? when you look at this and you try and think कि मैं इसकी पावर कैसे बढ़ाऊं और किस तरीके से काम करूं, तो बहुत अजीब दिखता है. Yes or no? But now when you try and see from a different approach, this is equal to 1. You know 1 is कोई भी a है उसकी पावर अगर 0 हो जाए, so that is 1. Yes or no? So that means I say this is equal to 1, which means it says x square minus 7x plus 11 equals to 0. तो जाकर ये 1 होगा. Do you agree with this or not? Yes or no? Which means जब मैं इसको और इसको इक्वेट करता हूं, what do I get is this is equal to 0, which means I get x square minus 13x plus 42 is equal to 0. Easy? Yes or no? Great. Okay, चलिए अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला that you have to solve this. You have to solve this. So I can do this. 42 है. Yes or no? 42 है. 42 is divided into 6 is to 7. ठीक है. So this is what x square minus 6x minus 7x plus 42 equal to 0. So I get x minus 6 into x minus 7 is equal to 0. So I get a value of x is equal to 6 or x is equal to 7. Okay. So that means basically ये equation solve करने के लिए I get a value of x is equal to 6, x is equal to 7. ठीक है, ये ऑप्शन बैठेगा. ठीक है, इन्होंने पूछा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आर पॉसिबल. ओके, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आर पॉसिबल. आप देख सकते हैं आई हैव टू वैल्यूज पॉसिबल फॉर दिस. यस और नो? कोई भी x की इस दो वैल्यू पे, x की इस दो वैल्यू पे, है ना, ये वैल्यू 0 हो जाएगी. सो भैया ये 0 मतलब यहाँ पे दो पॉसिबल है. यस और नो? ठीक है. व्हाट इज अनदर वे टू गेट, यू कैन से दिस कहानी? क्या एक और तरीका है जिसके द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? एक और तरीका है, ठीक है, कि ये जो अंदर का वैल्यू है वही खुद 1 बन जाए. यस और नो? तो 1 की कोई भी पावर ले लीजिए, इट इज 1. यस और नो? ठीक है. सो दैट मींस अनदर वे वुड बी दिस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू 1. ये मान सकते हैं, which means x square minus 7x plus 10 equal to 0. So this becomes x square minus 5x minus 2x plus 10 equal to 0. So x is equal to 5 and x is equal to 2. ये दो वैल्यू पॉसिबल है. मतलब इधर x equal to 2 we get 1, x equal to 5 we get 1, x equal to 6 we get 1, x equal to 7 we get 1, and thereby answer would be 4. 4 distinct positive integers are giving this equation equals to 1. I hope this idea is very clear to you. आपको ये बात समझ में आ रही होगी? बिल्कुल सही बात है दोस्तों. ये समझिए, ये इक्वेशन कब 1 पॉसिबल था? जब या तो पावर 0 हो जाए या बेस वैल्यू 1 बन जाए. या तो पावर 0 हो जाए या बेस वैल्यू 1 बन जाए, तब ये इक्वल टू 1 बनने वाला था. हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया. वी गेट 4 डिफरेंट वैल्यूज एंड आंसर वुड बी 4. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. यस, वेरी गुड. इजी कंसेप्ट था दोस्तों, आप आसानी से करने के काबिल होंगे. आई एम श्योर यू आर गेनिंग दिस आइडिया विथ मी. ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल to be part of Pro Talent. Okay, thank you very much and all the best.